In which country is the Taklamakan Desert located? In which country is the Taklamakan Desert located? तो ये को कंट्री रे आसीबो टक्लामाकान डेजर्ट देखो रिमेंबर करो तापर आपण कोन करिवे आंसर लिखबे कोन आसीबो आंसर आसीबो कोन दैट इज चाइना नेक्स्ट देखो व्हिच न्यूज़पेपर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट इन साउथ अफ्रीका व्हिच न्यूज़पेपर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट इन साउथ अफ्रीका कोन परिबो आंसर आंसर आसीबो कोन दैट इज इंडियन ओपिनियन इंडियन ओपिनियन जोटा कि 1903 रे कोन हेतिला पब्लिश हेतिला आस्तला कोन इंडियन ओपिनियन इन साउथ अफ्रीका बाय महात्मा गांधी नेक्स्ट देखो हु इज द राइटर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड हु इज द राइटर ऑफ द बुक और ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड कोन परिबो आंसर आसीबो कोन हां फास्ट बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट देखो 4 नंबर देछि कोन विथ स्ट्रेट होला स्ट्रेट which strait connects the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean तो पचासी कौन को स्ट्रेट कनेक्ट करे काहको ना अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन है तो दुईटा वाटर बॉडी की कौन करे गोटे स्ट्रेट जॉइन करे तो स्ट्रेट नेम पचारची जे कि अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को जॉइंट करे कौन आसीबो आंसर मन रखिबे कौन आसीबो ना स्ट्रेट ऑफ कौन आसीबो मैगलान ओके मैगलान MAGELLAN है स्ट्रेट ऑफ मैगलान नेक्स्ट देखिबा 5 नंबर which is the largest island in the Mediterranean Sea तो से पचासी कौन लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरियन सी रो लार्जेस्ट आइलैंड कौन और आमे कौन कहि परिबा ना लार्जेस्ट आइलैंड लोकेटेड इन द मेडिटेरियन सी कौन परिबा तो ये आसबो कौन दैट इज सिसिली ओके सी SICILY सिसिली SICILY सिसिली नेक्स्ट देखो नेम द रीट अंडर व्हिच द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द arrested person should be presented before it or can order to set free an arrested person if the manner or grounds of arrest are not lawful or satisfactory तो से पचार को रीड जारी करी कोर्ट कौन करती ऑर्डर दियंती जड़े जदि गोटे पर्सन कौन अरेस्टेड होती बुझिले ना नहीं ताको फ्री करने पूर्वर बुझिला ना नहीं कौन करवा कोर्ट रे हाजर करवा जदि कौन अरेस्टेड जदि नॉट लॉफुल आउ सैटिस्फैक्टरी है नथिबो तो तांगे कौन करवार कोर्ट रे हाजिर करवार अछि तो सी एटा को रीट रे लिखा है बा एटा को रीट जारी करती कोर्ट कौन हो पारिबो देखो 5 रीट अछि आर्टिकल 32 अनुसार कौन सुप्रीम कोर्ट जारी करती आर्टिकल 226 बा 226 अनुसार कौन हाईकोर्ट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड हाईकोर्ट आर्टिकल 226 अनुसार बुझला जदि हम देखा रिट आसो 5 टाइप्स रो को रिट आसो ना ये आसो हेबिस कॉर्पस मन रख हेबिस कॉर्पस नेक्स्ट देखा नेम द ब्रिटिश केमिस्ट हु प्रेजेंटेड
presented the atomic theory in 1808 ହେଲା presented atomic theory in 1808 on conservation of mass and law of definite proportions, which was a turning point in the study of matter. ସେ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ନେମ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ chemist who presented atomic theory in 1808 on conservation of mass and law of definite proportions ବୁଝିଲା ଦିଟା ଲ ଦେଇଥିଲେ which was a turning point in the study of matter ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବା ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜନ୍ ଡାଲ୍ଟନ୍ ବୁଝିଲେ next ଦେଖ in 1930 who organized the Dalits into the depressed class association and demanded separate electorates for them ତ ଭିତରୁ ଆସିବ କ'ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଆସିଛି 1930 ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ organized the Dalits into କ'ଣ କରିଥିଲେ depressed class association फाउंड करथिले आउ कोन कहिथिले डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर देम तो व्यक्तित्व कोन आसीबे एटे बा की आसीबे व्यक्तित्व आंसर आसीबे कोन ना डॉक्टर बी आर अंबेडकर देखो 9 नंबर देइछि name the viceroy of India who was associated with the controversial Liberty Bill during the Indian freedom struggle. Liberty Bill during the Indian freedom struggle. को viceroy या सहित associated हेबे Liberty Bill सहित के associated हेबे आंसर आसीबो कोन दैट इज लॉर्ड रिफन बुझिला 1880 रु 84 बोथे ना 1980 रु 84 टाइम पीरियड केते हिजिबो ओके नेक्स्ट देखो देइछि कोन व्हेन इज नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे केबे आसीबो When is National Pollution Prevention Day observed in India? केबे आसीबो ना 2 अक्टोबर रे आसीबो कोन ना नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे बुझिला सॉरी 2 डिसेंबर ओके 2 डिसेंबर अक्टोबर नुहे 2 डिसेंबर आसीबो नेक्स्ट देखो थ्रू व्हिच सिटीज डज हडसन रिवर फ्लो through which city does the Hudson River flow the Hudson River को सिटी देगी फ्लो हिच हैला गोटे सिटी आपण कहि देला अब जोटा कि मेन बा प्रोमिनेंट सिटी सही आसीबो कोन थ्रियो न्यूयॉर्क नेक्स्ट देखो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस सिचुएटेड Where is the headquarter of the International Committee of the Red Cross situated? What आसीबो headquarter of International Committee of the Red Cross ये आसीबो कोडे ना जेनेवा स्विट्जरलैंड नेक्स्ट देखो बेंगल गैजेट the first major newspaper in India started in the year Bengal Gazette केबे आसिला first major newspaper of India started year केबे हिजबो आंसर आसीबो कहबे ना 1780 जदि हम देखिबा फाउंडर के थिले ना जेम्स ऑगस्ट हिके HICKY हिके ओके नेक्स्ट देखो 14 which article of the Indian Constitution deals with the protection of interest of minorities तो वो आर्टिकल मेंशन अछि कोन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल कोन आसीबो
एटा आंसर आसीबो कोन दैट इज आर्टिकल 29. नेक्स्ट देखो 15 देछि व्हिच ऑफ द डे इज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड एज अर्थ डे इज योर हम तो देखिबा अर्थ डे केबे पड़े अर्थ डे तो कौन आसीबो ना अर्थ डे आसीबो केबे ना 22 एप्रिल. नेक्स्ट देखो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन डेज ऑफ द एलिमेंट्स यदि हम देखिबा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काहाकू नै कि हेछि एलिमेंट्स मानकर कोन को नै माने सजाटा द्वारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रो एलिमेंट्स गुडा को सजा जाइछि तो एलिमेंट्स रो कोन को नै सजा जाइछि को कैरेक्टरिस्टिक को नै सजा जाइछि बोली पचारछि एटा आसीबो कोन एटॉमिक नंबर बुझिले. नेक्स्ट देखो हु इज प्रॉपर्ली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट हु इज प्रॉपर्ली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट के इज वे ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट तो आंसर आसीबो कोन दैट इज अरुणा असफ अली बुझिले. नेक्स्ट देखिबा देखो 18 देछि इन 1527 बाबर डिफेट राणा सांगा द राजपूत रूलर ऑफ मेवार इन द बैटल ऑफ यदि हम देखिबा 1527 रे बाबर एंड राणा सांगा मध्य रे जो युद्ध होइतिला ताको हम कोन कहिबा बैटल ऑफ कोन हिजिबो कोन आसीबो तड मन रखिबो आंसर आसीबो कोन दैट इज बैटल ऑफ हनवा. ओके नेक्स्ट देखो 19 देछि द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम वाज एस्टैब्लिश्ड एट डेस अंडर ब्रिटिश रूल तो पचासी कोन ना कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम केबे एस्टैब्लिशमेंट हेइथिला बोली पचासी सॉरी कोठे हेइथिला बोली पचासी प्लेस कोड आसीबो कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम आंसर आसीबो कोन दैट इज कलकत्ता. ओके नेक्स्ट देखो as a part of non-cooperation movement in 1922 the angry peasants had set ablaze the police station of which place देखो set ablaze means कोन 1922 रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समय रे 1922 रे कोन हला ना एग्री पिजेंट्स माने कोन करले बुझिला बा किसी एंग्री मोब माने क्राउड कोन करले पुलिस स्टेशन रे निया लगै दैथिले तो से इंसिडेंट को हम कोन कहबा बा से प्लेस टा को हम कोन कहबा मन पकपेले 1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ओके एंग्री मोबो बा एंग्री पिजेंट्स बुझिला गोटे पुलिस स्टेशन रे कोन करथिले निया लगै दैथिले तो इंसिडेंट कोन आसीबो तो प्लेस आसीबो कोन दैट इज चौरी चरा इंसिडेंट बा चौरी चरा प्लेस रे से कोन करथिले निया लगैथिले. ओके नेक्स्ट देखो which article of the constitution of india deals with the composition of legislative council जदि हम देखिबा को आर्टिकल मेंशन अछि composition of the legislative council कोन आसीबो which article of the constitution of india deals with the composition of the legislative council आंसर आसीबो कोन दैट इज आर्टिकल 171. नेक्स्ट देखो 22 देछि which article mentions about the appropriation bill in the state legislature तो को आर्टिकल ले मेंशन अछि कोन appropriation bills in the state legislature तो कोन आसीबा पे आर्टिकल तो ये आसीबो कोन ना आर्टिकल 204. नेक्स्ट देखो 23 देछि which article of the constitution mention that there shall be a pay to the judges of the supreme court such salaries as may be determined by the parliament by law
and until provisions in that BF is so made, such salaries are specified in the second schedule. ଦେଖ ପିଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିଛି କ'ଣ ନା କୋ ଆର୍ଟିକାଲରେ ମେନସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ସାଲାରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଉନ୍ସ ବିଷୟରେ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟିକାଲରେ ଗୋଟେ ମେନସନ୍ ଅଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସେଡ୍ୟୁଲରେ ବି କ'ଣ ସାଲାରୀ କଥା ମେନସନ୍ଡ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ତ କୋ ଆର୍ଟିକାଲରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କ ସାଲାରୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ତ ୟା ପାଇଁ ଆର୍ଟିକାଲ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଆର୍ଟିକାଲ ଆସିବ କ'ଣ 125 ହେଲା, 124 କ'ଣ ଆସିବ there shall be a Supreme Court of okay which parts of the Indian Constitution mentions about the relations between union and states। ତ କୋ ପାର୍ଟ ରେ ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ର ରିଲେସନ୍ସ କଥା ବା ରିଲେସନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ପାର୍ଟ କ'ଣ ଆସିବା ପାଇଁ ତାର ମନେ ରଖିବା ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ପାର୍ଟ 11 ଆସିବ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which article of the constitution directs the council of ministers to aid and advise the governor। ବୁଝିଲା, council of ministers aid and advise the governor, ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କଥା ଆସିଛି। ଓକେ ତା ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ କ'ଣ ଆସିବ ଆର୍ଟିକଲ ଆସିବ 163 ଆସିବ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। नेक्स्ट देखो पिले 26 देजी व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर व्हिच ए मेंबर ऑफ ए हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट इज विथआउट परमिशन ऑफ द हाउस absent from all meetings therefore the house may be declare his seat vacant। से कहिछि कोन माने एते दिन जने कोन करबो जने मेंबर यदि absent रुहे बुझिला ना नहीं हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कौन बिना परमिशन से कौन करती हाउस रु कौन करती आबसेंट रुहती है जे कौन मीटिंग हुए तो तांको सीट को केते दिन पर कौन कराबो वेकेंट बोली डिक्लेयर कर जिवो। तो आसीबो केते ना 60 डेज। नेक्स्ट देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस डाउन क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। तो को आर्टिकल रे मेंशन अछि कोन ना मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट माने क्वालिफिकेशन कौन हवा दरकार जने एमपी हवा पई बा मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट हला पार्लियामेंट रे जने मेंबर हवा पई ताकर क्वालिफिकेशन कौन हवा दरकार को आर्टिकल उल्लेख अछि। कौन आसीबो आंसर आसीबो कोन आर्टिकल 84। नेक्स्ट देखो which national waterways by NW is associated with उद्योग मंडल एंड चंपाकर कैनाल्स। तो को नेशनल वाटरवे सहित कौन उद्योग मंडल एंड चंपाकर कैनाल एसोसिएटेड। आंसर आसीबो कोन ना नेशनल वाटरवे 3। नेक्स्ट देखो द पिटी बर्ड सेंचुरी is located in which union territory or state of India। तो पिटी बर्ड सेंचुरी कोड आसीबो कोन हे बारे आंसर तार आंसर मन रखिबो कोन आसीबो ना लाक्षाद्वीप बुझला। नेक्स्ट देखो 31 ए फेमस हिल स्टेशन रानीखेत इज लोकेटेड ऑन व्हिच माउंटेन। यदि हम देखिबा गोटे फेमस हिल स्टेशन तो ये कोठे देखा जाए सॉरी 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 भूल है नहीं हाँ ये लिखो है यहाँ हूँ लाक्षाद्वीप बुझला। हाँ 30 नंबर देख इन व्हिच स्टेट इज कावाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड सॉरी इन व्हिच स्टेट इज कावाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। आसो गोटे ना तेलंगाना बुझला। नेक्स्ट देख 31 देछि ए फेमस हिल स्टेशन रानीखेत इज लोकेटेड ऑन व्हिच माउंटेन। तो रानीखेत आसीबो को माउंटेन रे आसीबो
प्लेस आसीबो कोन बा देखो पले माउंटेन आपण जदी डायरेक्ट मेंशन करियो चाहछंती तो आसीबो कोन ना कुमायून हिल्स KUMAON कुमायून हिमालयस बुझला नेक्स्ट देखो देखो ओक एंड चेस्टनट ट्रीज आर फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया जदि ओक और चेस्टनट कथा देखिबा तो ए गुडा को प्रकार वेजिटेशन रे देखा जांती बा को प्रकार फॉरेस्ट रे देखा जांती कोन आसीबो देखो यार आंसर है कोन दैट इज माउंटेन देखो माउंटेन फॉरेस्ट आपण लिखिले करेक्ट हो किछ असुविधा नहीं किंतु बेस्ट हो आपण लिखिबे माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट बुझिला माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट नेक्स्ट देखो व्हेन इज द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड sorry when is the national unity day celebrated in India national unity day तो ये आसीबो केबे ना अक्टोबर 31st नेक्स्ट देखो in which cities of India was the first successful textile mill established first successful textile mill कोड आसीबो देखो क्वेश्चन भल से पढ़िबो होला फास्ट टेक्सटाइल मिल अलगा फास्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल अलगा बुझले आंसर भेरी हे जिवो आंसर आसीबो कोडे ना बॉम्बे 1854 रे आसला हला आपन प्लेस इंपोर्टेंट आपन प्लेस लिखिले किछ असुविधा नै नेक्स्ट देखो दिस इज सांगपो एंड दिहांग आर अदर नेम्स ऑफ व्हिच रिवर सांगपो एंड दिहांग आर अदर नेम्स ऑफ व्हिच रिवर कोन आसीबार आंसर तो लिखिबे कोन ना ब्रह्मपुत्र रिवर नेक्स्ट देखो यूएनए बा यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट कोन हे परिबो यूएनए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे केबे आसीबो तो ये आसीबो केबे ना 3rd मार्च रे आसीबो 3rd मार्च नेक्स्ट देखो व्हिच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया तो को बैटल पर कोन आसिला ना ब्रिटिश रास बा को बैटल पर कोन आसिला बा को बैटल पर आसीबो कोन ना ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया आंसर आसीबो कोन ना बैटल ऑफ प्लासी केबे आसिला ना 1757 आसिला बैटल ऑफ प्लासी नेक्स्ट देखो व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लीड टू इंक्लूजन ऑफ सिक्किम इन द इंडियन यूनियन तो को सीएए बा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार कोन हला सिक्किम को भारत रे गोटे कोन राज्य रो दर्जा दिया गला बाय री इंक्लूजन ऑफ सिक्किम इन द इंडियन यूनियन तो ये आसीबो कोन ना 36th सीएए नेक्स्ट देखो पहाड़ an art form which state is a religious form of painting पहाड़ सेटा को स्टेट रो गोटे आर्ट फॉर्म हे जिवो तो पेंटिंग आंसर आसीबो कोन ना राजस्थान नेक्स्ट देखो सीएसआईआर स्टैंड फॉर तो सीएसआईआर रो फुल फॉर्म कोन हे जिवो सेटा आंसर आसीबो कोन ना काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बुझिला नेक्स्ट देखो ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप बा जीआरडीपी वाज क्रिएटेड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन देखो पले एटू करंट अफेयर्स अपन स्टार्टिंग होची जो माने भी पढुचंदी बा जो माने पढु नांती भी सेमान पे मध्ये इंपोर्टेंट तो एगुडा को आपण देखि कि जिवे मिनिमम आपण 4 कि 5 मंथ रो देखि जिवे हला
मिनिमम तो आपनकर स्ट्रेट रे 6 मंथ पचारे हला प्रीवियस 6 मंथ भीतर आपनकर पचारे आसीबो कोन ना WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप वाज क्रिएटेड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन तो मन रखिबो WHO द्वारा नेक्स्ट देखो व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन recently launched by CBI to dismantle cyber crime networks involved in online child sexual exploitation तो आपे ऑपरेशन कोन आसीबो तो आंसर आसीबो कोन ना ऑपरेशन हॉक HAWK ओके नेक्स्ट देखो which wildlife sanctuary has become the second cheetah site after Kunu National Park तो पचाछि कोन ना कुनु नेशनल पार्क परे सेकंड चीता साइट कोड आइजिवो को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आइजिवो कोन हे परिबो आंसर आसीबो कोन ना गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मन रखिबो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेक्स्ट देखो which state government has launched the pink e-rickshaw scheme to empower women in April 2025 pink e-rickshaw scheme को स्टेट गवर्नमेंट सहित एसोसिएटेड हबो आंसर आसीबो कोन ना महाराष्ट्र बुझला महाराष्ट्र नेक्स्ट देखो which space organization has developed first ever space based quantum sensor for gravity measurements which space organization has developed first ever space based quantum sensor for gravity measurements तो आप जानिथिबे दैट इज द नासा नेक्स्ट देखो टूटी आइलैंड which was seen in news is located in which country या आपनकर स्टैटिक पार्ट है होला टूटी टूटी आइलैंड एटा वर्तमान कोन रिसेंटली न्यूज माने न्यूज रे आपनकर आलोचना हेतिला तो को कंट्री रे आपनकर आसीबो लोकेशन टूटी आइलैंड तो आपन डायरेक्ट कंट्री मेंशन करले भी कोनसी असुविधा नहीं सुदान नेक्स्ट देखो which ministry is responsible for the implementation of a PM पोषण स्कीम तो PM पोषण स्कीम सहित को मिनिस्ट्री आसीबो बा को मिनिस्ट्री अंडर रे ये आसीबो आंसर आसीबो कोन ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेक्स्ट देखो which state has achieved the GI tag for Rindi silk इंडिया सिल्क आसीबो कोन तो आसीबो कोन दैट इज मेघालय हां मेघालय थिला मेघालय नेक्स्ट देखो द मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट तो ये आसीबो कोन ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट नेक्स्ट देखो which country recently honored prime minister नरेंद्र मोदी with its highest civilian award मित्र विभूषण जदि हम देखिबा वर्तमान कोन बा कंट्री रो हाईएस्ट ऑनर हिजबो कोन ना मित्र विभूषण द्वारा पीएम को सम्मानित करा जायतिला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ व्हिच कंट्री दैट इज मित्र विभूषण आंसर आसीबो कोन ना श्रीलंका parenchyma and collenchyma are the type of which tissues जदि हम देखिबा parenchyma and collenchyma एगुडा को प्रकार टिश्यू रे आसीबो कोन हे परबा आंसर तार आंसर आसीबो कोन दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू मन रखिबो सिंपल परमानेंट
टिश्यू बुझले इंपोर्टेंट नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर व्हेन वाज गोवा कैप्चर्ड बाय द पोर्तुगीज तो गोवा को पोर्तुगीज माने केबे कैप्चर करले तो ईयर एटा आपन को पचारसी गोवा कैप्चर्ड बाय द पोर्तुगीज ईयर कोन हिजबो तो ईयर आसीबो एटा केबे ना 1510 नेक्स्ट देखो blood has a fluid matrix called death in which RBC, WBC and platelets are suspended. तो से पचार कौन ब्लड हाज ए फ्लुइड मैट्रिक्स है ब्लड गोटे फ्लुइड मैट्रिक्स अच्छे आम कौन कह जो कौन आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट गुड़ाक अच्छे बोली पचार ब्लड फ्लुइड मेंबर को आम कौन कह फ्लुइड मैट्रिक्स कौन आसो तो आंसर आसो कौन दैट इज प्लाज्मा नेक्स्ट देखो 4 नंबर देछि द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया इज इन व्हिच प्लेस आपण एठे कोन करिवे क्वेश्चन को ये कर देबे ठीक द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया इज व्हिच हैला प्लेसेस आपण देखोनी लिखि दियो खाली लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कोडा हिजबो इंडिया रो कोन हे परिबो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आंसर आसबो कोन दैट इज कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कुदनकुलम हला कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बुझला जोटा कि आसबो कोडे ना तमिलनाडु रे बुझला दीडी जाटा आपण मन रखिबे नेक्स्ट देखो 5 नंबर देछि वेयर इज कोलेरु लेक सिचुएटेड तो कोलेरु लेक को स्टेट रे आसीबो आपनकर वेयर इज द कोलेरु लेक सिचुएटेड कोन हे परिबो तार आंसर आसीबो कोडे ना दैट इज आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश नेक्स्ट देखो देखो 6 नंबर देछि काठिवारा पेनिनसुला इज द जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एक्सटेंशन ऑफ व्हिच स्टेट काठिवारा पेनिनसुला is a geographical and cultural extension of which state आंसर कौन हो तार आंसर मन रख कौन आसो ना गुजरात हो करेक्ट आंसर है गुड़ा जगह आप आसो कौन अहमदाबाद लिखाई है स्टेट पचासी मेंशन कर गुजरात नेक्स्ट देख द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन शुड बी तो नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रो चेयरमैन जने किए हिथिबे बुझले ना नहीं काहा को नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रो चेयरमैन रूपे नियुक्ति करा जाए आंसर आसीबो कोन ना ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जने कोन हिथिबे ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किंबा कोन हे परिबे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट किंबा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बुझला तो दी जन भितरु जाक मध्य कोन चेयरमैन रूप रे नियुक्ति होंती नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रो और नेक्स्ट देखो 8 नंबर देछि which two freedom fighters threw smoke bombs at the Delhi Central Legislative Assembly in 1929 कौन हो पारिबो देखो बोले टिके टॉप क्वेश्चन हला आपण जनी पढी थिबे तो इजीली आपण एटे आंसर करि परिबे दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव थ्रू स्मोक बॉम्ब जन पर्सन आसबे कि ना भगत सिंह हला फास्ट तो आपण भगत सिंह फ्रीडम फाइटर आ जन के आसबे पातुकेश्वर दत्त पातुकेश्वर दत्त बुझले नेक्स्ट देखो which unity is used to measure the intensity of a sound the intensity of sound ro
यूनिटी कौन हो which unit is used to measure the intensity of a sound तो ये जीव कौन ना डेसिबल्स है डेसिबल्स जोटा कि कह जाए डीबी नेक्स्ट देख which article of the Indian Constitution deals with financial emergency तो को आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी कथा उल्लेख अछि आसिबा पे आर्टिकल कौन आर्टिकल 360 नेक्स्ट देख इबान बाटुटा ए फेमस मोराकन ट्राभेलर visited India during the time of तो जदि हम देखिबा इबान बाटुटा कौन जने मोराकन ट्राभेलर से को समय रे भारत आस्थिले कहा समय रे भारत आस्थिले कौन परिबो A famous Moroccan traveler visited India during the time of आंसर आसीबो कोन दैट इज दिल्ली सल्तनत समय है दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत समय रे माने पर्सन के जी बेटे ना मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ओके मन रखिबो मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट देखो हु चेयर द कमीशन दैट drafted the Indian Penal Code which was enacted in 1860 who chaired the commission that drafted the Indian Penal Code which was enacted in 1860 the person name कौन है जोड़े कौन है परिवो ना आंसर आसीबो थॉमस माकुले ओके थॉमस माकुले बुझले नेक्स्ट देखो who invented smallpox vaccine who invented smallpox vaccine who invented smallpox vaccine आंसर आसीबो कोन ना एडवर्ड जेनर केबे ना 1796 रे ओके नेक्स्ट देखो which article of the constitution of India emphasizes the participation of workers in the management of industries which article of the constitution of India emphasizes the participation of workers in the management of industries तो को आर्टिकल रे ये उल्लेखित अछि कोन परिबा आंसर आरो आंसर आसीबो कोन दैट इज आर्टिकल 43 ए नेक्स्ट देखो देखो 15 देछि which article of the Indian constitution has provisions for the appointment of high court judges तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल ने मेंशन अछि कोन अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस तो या पे आर्टिकल कोन आसीबो आंसर आसीबो कोन दैट इज आर्टिकल 217 बुझला आर्टिकल 217 रे मन रखिबो नेक्स्ट देखो पहले 16 देछि which article of the constitution of India describes a key feature of universal adult franchise that grants the right to vote to citizens above the age of 18 years यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज को आर्टिकल रे मेंशन अछि बोली से पचा अछि जहां अनुसार कोन ना एवरी सिटीजन हैव राइट टू vote कोन राइट टू vote to citizens above the age of 18 years तो कोन आसीबो आ पई आर्टिकल कोन आसीबो
ତ ଏଠି ମନେ ରଖିବ ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ଟିକଲ 326 ଓକେ ଆର୍ଟିକଲ 326 ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ with added by with constitutional amendment act ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି କୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଆଡ୍ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖ ବୋଲେ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିବ ନା 97th CAA ଆସିବ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ପାର୍ଟ 9B କ'ଣ ହେଲା ଆସିଲା ବୁଝିଲା ବା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 18 ନମ୍ବର ଦେଇଛି which article of the constitution of India states that the parliament consists of the president of India and the two houses of parliament known as council of states and house of the people that is Lok Sabha। ସେ ପଚାରିଛି କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନସନ ଅଛି କ'ଣ the parliament consists of the president of India and two houses of parliament that is Rajya Sabha and Lok Sabha। ତ ୟା ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ କ'ଣ ଆସିବ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତ ୟାର ଆର୍ଟିକଲ ଆସିବ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ଟିକଲ 79 ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ which event did ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର return the title of knighthood to the British government while expressing his anguish। ତ କୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କ'ଣ କଲେ ନାଇଟହୁଡ ତ ଫେରସ୍ତ କଲେ ତ ୟା ପାଇଁ ଆସିବ କ'ଣ ନା 13 ଏପ୍ରିଲରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା କ'ଣ 1990ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜାଲିଆନାବାଗ ଟ୍ରେଜେଡି ଯୋଗୁରୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନାଇଟହୁଡ ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ନା ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ଟ୍ରେଜେଡି ଓକେ incident। Next देखो who founded the Arya Samaj in Mumbai in 1875 तो फाउंडर ऑफ आर्य समाज जोटा कि फाउंडेशन कोड थिला मुंबई रे ईयर केबे 1875 रे तो यार फाउंडर के हिजबे आंसर आसीबो कोन दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती मन रखिबो स्वामी दयानंद सरस्वती बुझला। नेक्स्ट देखो Page 21 which Governor General of British India helped Raja Rammohn Roy legally abolish the sati practice पचासी को गवर्नर जनरल जे कि कोन राजा राममोहन को हेल्प करथिले कोन सती प्रथा कोन बा सती प्रैक्टिस को कोन करबा पे एबोलाइज करबा पे बा एबोलाइज द सती प्रैक्टिस को गवर्नर जनरल को समय रे हेतिला बोली पचारसी। तो आंसर आसीबो कोन दैट इज विलियम बेंटिंग बुझला। नेक्स्ट देखो 22 where was the Hindu college established in the year 1791 तो हिंदू कॉलेज 1791 आसिला तो कोड आसिला ये आंसर आसीबो कोन दैट इज ए बनारस ओके। नेक्स्ट देखो 23 ଦେଇଛି under which following's patronage the Vikramshila University in 18th century India was founded तो Vikramshila University ର फाउंडर की को फॉलोइंग ହେଇଯିବେ कोन हे परिबो तो आंसर आसीबो कोन दैट इज धर्मपाल ओके। नेक्स्ट 24 in which royal dynasty of early medieval Odisha we find the rule of queens found the rule of queens in which royal dynasty of early medieval Odisha we found the rule of queens
आंसर आसीबो कोन दैट इज होमकर डायनेस्टी। होमकर डायनेस्टी। नेक्स्ट देखो देखो 25 ଦେଇଛି द ग्रेट पोएट जयदेव फ्लोराइज्ड ड्यूरिंग व्हिच डायनेस्टी इन ओडिशा। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜୟଦେव ସେ ଜଣେ ପୋଏଟ୍ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟର ମାନେ କବି ଥିଲେ ବା କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ କଣ ହେଇଯିବ? आंसर ଆସିବ କଣ दैट इज द गंगा डायनेस्टी। गंगा डायनेस्टी। नेक्स्ट देखो 26 ଦେଇଛି ପାଲି କୁତବ शाह इन्वेंटेड ओडिशा ड्यूरिंग द डिजिन ऑफ व्हिच रूलर। आंसर ଆସିବ କେବେ ନା 1522 ରେ କଣ ଆଟାक ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ସମୟରେ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ओके मन रखिबो इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखो इन व्हिच ईयर संबलपुर वाज एनेक्स्ड अंडर द लॉर्ड डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो से पचासी संबलपुर केबे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंडर रे आसिला जोड़ा कि कार पॉलिसी थिला ना डेलहाउसी को पॉलिसी थिला। आंसर केबे आसीबो ना 1849 रे आसीबो बुझिला। नेक्स्ट देखो 28 हु इज द फर्स्ट ओडिया वुमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। फर्स्ट ओडिया वुमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड किए हिजबे? तांका आंसर आसीबो कोन दैट इज प्रतिभा राय। प्रतिभा राय। प्रतिभा राय बुझिला। नेक्स्ट देखो खंडधार वाटरफॉल सिचुएट इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। खंडधार वाटरफॉल को जिल्ला रे आसीबो आपनकर? ता आंसर आसीबो कोन दैट इज सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ହେଲା। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट देखो देखो 30 ଦେଇଛି ओडिशा's first woman mountaineer who scaled Mount Everest। ओडिशा's first woman mountaineer who scaled the Mount Everest କିଏ ଯିବେ? आंसर आसीबो कोन ना कल्पना दास। कल्पना दास। नेक्स्ट देखो इन व्हिच ईयर कला पहाड़ इन्वेंटेड ओडिशा। व्हिच ईयर कला पहाड़ इन्वेंटेड ओडिशा? केबे आसीबो ना 1568 सीई। ओके नेक्स्ट देखो व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू लंडन। व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू लंडन बा लंडन को रिवर साइड रे आसीबो? लंडन सिटी को रिवर साइड रे आसीबो? आंसर आसीबो कोन दैट इज थेम्स बुझिला। नेक्स्ट देखो हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? किए जिवे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? आंसर आसीबो कोन ना सुकुमार सेन। नेक्स्ट देखो which strait lies between Russia and a state of the United States of America। which state lies between Russia and a state of the United Nations of America? ता ପାଇଁ को स्ट्रेट आसीबो आपनकर? आंसर आसीबो कोन दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट देखो हिनायन एंड महायान आर सेक्ट्स ऑफ व्हिच रिलीजन। हिनायन एंड महायान आर सेक्ट्स ऑफ व्हिच रिलीजन? तो दीटा सेक्ट आसीबो कोन हिनायन एंड महायान
କାହାର ବା କୋ ରିଲିଜନର ଦିଟା ସେକ୍ଟ ଆସିବ। आंसर आसो कौन दैट इज बुद्धिज्म। ओके बुद्धिज्म। नेक्स्ट देखो व्हिच कैनाल कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन एंड द अटलांटिक ओशन। व्हिच कैनाल कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन कौन हो पारिबो। आंसर आसो कौन दैट इज पानाम कैनाल। पानामा कैनाल पानाम कैनाल बोली हम कहबा। ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देछि कोन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। तो ऑथर किए हिज यार कौन आसीबो आंसर। आंसर आसीबो कोन ना बाराक ओबामा। नेक्स्ट देखो इन व्हिच डेट नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड। तो नेशनल वोटर्स डे केबे आसीबो। नेशनल वोटर्स डे आंसर आसीबो कोन ना 25th जनवरी। इन व्हिच डेट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड। इन व्हिच डे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड सेलिब्रेटेड कौन हो पारिबो। तार आंसर आसीबो कोन ना दैट इज 21st फेब्रुआरी। ओके नेक्स्ट देखो इन व्हिच डेट एंटी टोबाको डे ऑब्जर्व्ड। एंटी टोबाको डे केबे आसीबो। एंटी टोबाको डे तो 31st मे। नेक्स्ट देखो देखो बेले एटू करंट अफेयर्स आपण स्टार्टिंग होउची जोटा कि रिसेंट करंट अफेयर्स गुडाक आपणर जोटा कि बेसिक जोटा कि प्रीवियस और बेसिक अनुसार पचारे तो से अनुसार किसी नहीं व्हिच स्टेट हैज नोटिफाइड सार्फ टू कंजर्वेशन रिजर्व एज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया टू कंजर्व हाई अल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लेपर्ड्स। सार्फ टू कंजर्वेशन रिजर्व कोड आसीबो। तो कौन आसीबो स्टेट आपनर एठे स्टेट आसीबो कोन स्टेट आसीबो हिमाचल प्रदेश बुझिले। आपण टिके टिके देखुथिबे करंट अफेयर्स प्रीवियस माने 6 मंथ रो। ओके हु हैज बिकम कनाडा's फर्स्ट हिंदू वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द फॉरेन मिनिस्ट्री। कनाडा's फर्स्ट हिंदू वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द फॉरेन मिनिस्ट्री आंसर आसीबो कोन ना अनिता आनंद। ओके नेक्स्ट देखो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बा नालसा। वर्तमान नालसार एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किए जी जोटा कि मे 2025 रे कोन अपॉइंटेड हेले। तो पर्सन को नाम कौन हो से आसो कौन ना सूर्यकांत बुझे। नेक्स्ट देखो व्हिच लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया इज सेड टू बिकम द फास्ट टू ऑपरेट एंटायरली ऑन सोलर एनर्जी। व्हिच लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया इज सेड टू बिकम द फास्ट टू ऑपरेट एंटायरली ऑन सोलर एनर्जी। को लेजिस्लेटिव बॉडी इज बोल। आंसर आसो कौन दैट इज दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली
legislative assembly. Next देखो, who is the director of the Central Bureau of Investigation in 2025? Director of the Central Bureau Investigation और CBI रो director वर्तमान किए अछंती? आंसर आसिबो कोन, that is Pravin Sood. Pravin Sood. Next देखो, who has been appointed as the chairperson of the Lok Sabha Estimates Committee for the 25 to 26 term? Who has been appointed as the chairperson of Lok Sabha Estimates Committee? तो किए आसिबो एठे? आंसर आसिबो कोन ना संजय जायसवाल. ओके. नेक्स्ट देखो, when is World Press Freedom Day observed annually? When is World Press Freedom Day observed annually? आसिबो केबे ना 3rd May. नेक्स्ट देखो, 48 ଦେଇଛି, who has been appointed as the new chairman of the National Security Advisor Board, that is NSAB, in April 2025? New chairman of the National Security Advisor Board. କିଏ ଆସିବ ଏଠି? आंसर आसिबो कोन, that is आलोक जोशी. Okay. Next देखो, who is receiving the लता दीननाथ मंगेशकर award in 2024 ହେଲା, जोटा कि वर्तमान रिसेंटली मिलछि कि जेटा अवार्ड टा होछि केतलो ना 2024 रो लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2024. नेम द पर्सन, तो किए हिजबे रिसीविंग द लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 ହେଲା. आंसर आसिबो कोन, दैट इज कुमार मंगलम बिरला. मंगलम बिरला. बुझला. नेक्स्ट देखो, वेयर इज गरिया पूजा, ए ट्रेडिशनल ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विथ डेवोशन मेनली ऑब्जर्व. जदि हम देखिबा गरिया पूजा एटा को स्टेट रो हुए, जो गुडे ट्राइबल फेस्टिवल, स्टेट कोन आसीबो? गरिया पूजा इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? दैट इज a tribal festival. आंसर आसीबो कोन, दैट इज त्रिपुरा. ओके. In which year स्वामी विवेकानंद established रामकृष्ण मिशन? जदि हम देखिबा स्वामी विवेकानंद कोन करथिले, स्टार्टिंग करथिले रामकृष्ण मिशन. तो सेटा ईयर केबे हेइजिबो, से स्टार्टिंग करथिले रामकृष्ण मिशन? कोन हे परिबो? स्वामी विवेकानंद established रामकृष्ण मिशन. तार आंसर आसीबो कोन, मे 1 1897. 1897. ओके, मन रखिबो, मोस्ट इंपोर्टेंट. नेक्स्ट देखो, who discovered रेडियो एक्टिविटी? Who discovered रेडियो एक्टिविटी? तो रेडियो एक्टिविटी के डिस्कवर करथिले बोली एटा पचारछि आपन को. तो कोन होई परिबो आंसर? आंसर मन रखिबो हेनरी बक्यूरेल. ओके, मन रखिबो हेनरी बक्यूरेल. B E C Q U E R E L. ओके, जोटा कि 1896 रे आसला कोन ना रेडियो एक्टिविटी. बुझिला. नेक्स्ट देखो, which article in the Constitution of India guaranteed protection of life and personal liberty? जदि हम देखिबा कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल रे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कथा मेंशनड अछि. तो या पे आर्टिकल कोन होई जिवो बोली सेठे पचारसी. कोन आसीबो? तो एठा आंसर आसीबो कोन ना आर्टिकल 21. मन रखिबो आर्टिकल 21.
नेक्स्ट देखो 4 नंबर देइछि which article prohibits of traffic in human beings and forced labor जदि आम देखा ओ आर्टिकल रे कौन अच्छी ना रध अच्छी जे ह्यूमन ट्राफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर तो या पे आर्टिकल कौन आसीबो देख एगुड़ाक आप माने फंडामेंटाल राइट्स गुड़ाक अच्छी भलसे देखी जी कारण फंडामेंटाल राइट्स गुड़ाक गुड़ाए आर्टिकल अच्छी जो थी कि आप एग्जाम रे माने वेटेज अधिक अच्छी बुझला आंसर आसो के आर्टिकल 23 आर्टिकल 23 तो भलसे आप देखी जी आर्टिकल्स गुड़ाक जो थी आप वेटेज एग्जाम रे अधिक रोचे फंडामेंटाल राइट्स रे जी आप आर्टिकल गुड़ाक अच्छी देखो नेक्स्ट देखो व्हिच आर्टिकल कंटेन्स द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमिशन जदि हम देखिबा को आर्टिकल रे मेंशन अछि कोन ना पब्लिक सर्विस कमिशन विषय रे मेंशनड अछि तो या पे आर्टिकल कोन आसीबो कोन हे परिबो आंसर आसीबो कोन आर्टिकल 320 एड मन रखिबो आर्टिकल 320 नेक्स्ट देखो the Koyana hydroelectric power project is located in which state जदि हम देखिबा कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तो को स्टेट रे आसीबो स्टेट कोन आसीबो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आंसर आसीबो कोन ना महाराष्ट्र महाराष्ट्र ओके नेक्स्ट देखो 7 नंबर देछि द साकाईरा बिगन इन व्हिच ईयर जदि हम देखिबा साकाईरा केबे आसीबो देख साकाईरा को डायनेस्टी सहित आसीबो ना कृष्ण डायनेस्टी सहित आसीबो बुझला ना नहीं तो साकाईरा केबे हिजिबो एटा मन रखिबो आंसर आसीबो कोन ना 78 एडी रे आसीबो साकाईरा नेक्स्ट देखो 8 नंबर देछि कोन कालिदास वाज ए फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ जदि हम देखिबा कालिदास को इरा र कॉपी हिजिबा कहार कोर्ट पोएट थिले फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ कौन হবে आंसर आरो देखो तो कालिदास कथा जदि आसीबो ताहले आके आसीबो कोन ना गुप्त डायनेस्टी कथा आपनर एडा आसीबो बा गुप्त डायनेस्टी रो जदि रूलर कथा हम देखिबा हमें ना चंद्रगुप्त 2 जे कि विक्रमादित्य मध्य आंको कहा जाउतिला तो आंसर आसीबो एडे कोन ना चंद्रगुप्त 2 बुझला चंद्रगुप्त द्वितीय बा 2 बुझला ना नहीं आंको मध्य कहा जाउतिला कोन ना विक्रमादित्य तो आपण एडा आंसर लिखिबे कोन चंद्रगुप्त 2 ही लिखिबे बुझला ना नहीं जदि आप एक्स्ट्रा एडिशनल एडिशनल देबा चाहछन तो साइड रे विक्रमादित्य लिखि पारिबे बुझला बुझला विक्रमादित्य କିନ୍ତୁ ଆପଣ आंसर आसीबो कोन ओठे चंद्रगुप्त 2 नेक्स्ट देखो 9 नंबर देइछि which Delhi Sultanate rulers took the policy of blood and iron to deal with the minority community जदि हम देखिबा दिल्ली सल्तनत कथा हम देखिबा तो कार पॉलिसी थिला कोन ना ब्लड एंड आयरन टू डील विथ मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन हो पारिबा आंसर आंसर आसीबो कोन ना बलबन हला आंसर आपण मन रखिबे बलबन नेक्स्ट देखो 10 नंबर देसी इन 1539 द बैटल ऑफ चौसा वाज फाउट बिटवीन हुमायूं एंड डेस जदि हम देखिबा बैटल ऑफ चौसा केबे आसीबो ना 1539 रे आसीबो तो काहा काहा भीतर आसीबो हुमायूं एंड द सेकंड पर्सन के हिजिबो तो सूरी एम्पायर रो जने आसीबे क्यों ना शेरशाह सूरी मन रखिबो शेरशाह सूरी नेक्स्ट देखो 11 नंबर देछि व्हिच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ जदि हम देखिबा खालसा पंथ को सिख गुरु कोन करथिले फाउंडेड करथिले तांको द्वारा
फाउंडेशन होइतिला कोन ना खलसा पंथर कोन हे परिबो आंसर आंसर आसीबो कोन ना गुरु गोविंद सिंह मन रखिबो गुरु गोविंद सिंह ହେଲା जोटा केबे आसीबो ना 1699 रे आसीबो ହେଲା नेक्स्ट देखो देखो बेले 12 नंबर देइची कोन who killed Michael O'Dyer, the British officer responsible for the Jallianwala Bagh massacre. जदि आम देखा ना जालियाना बाग मासिकर जोटा कि कौन माने क्या दोषी दि जाता ना माइकल ओ डायर बुझिला ना नहीं तो तांको किए हत्या करते किल्ड माइकल ओ डायर जोटा कि केबे ना 1940 रे हेतिला कौन किल्ड माइकल ओ डायर आंसर हो कौन ना उधम सिंह उधम सिंह बुझला नेक्स्ट देख पे 13 नंबर देसी कौन देसी कौन हु फाउंडेड द तत्वोधिनी सभा दैट वाज सेट अप टू एक्सप्लोर स्पिरिचुअल ट्रुथ जदि हम देखा हु फाउंडेड द तत्वोधिनी सभा दैट वाज सेट अप टू एक्सप्लोर स्पिरिचुअल ट्रुथ तत्वोधिनी सभा आसो क्या सहित यार फाउंडर किए देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप मन रखिए मुझे अलरेडी जी आपणकर रेभल्ट ऑर्गेनाइजेशन हो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हो बिफोर आपणर जी आसला कौन ना आईएनसी री आसला माने आईएनएस फॉर्मेशन हेबा पूर्वरु आईएनसी सॉरी आईएनसी फॉर्मेशन हेबा पूर्वरु जी आपणकर कमिटी बा सभा आसला सेगुड़ाक किंबा पेजेंट रेभल्ट हो बुझिला ना नहीं एगुड़ाक आपण मन रखिए कंपलसरी कारण एगुड़ाक भितर आप जमी गोटे दुटा क्वेश्चन एग्जामिनेशन एग्जामिनर आपन को पसारे बुझला देख 13 नंबर हो कौन ना देवेंद्र नाथ टागोर मन रख देवेंद्र नाथ टागोर बुझले नेक्स्ट देख 14 नंबर देसी कौन इन 1939 त्रिपुरी कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सीतारामया वाज डिफेटेड बाय देख 1939 रे त्रिपुरी कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बा आईएनसी रो कौन होइतिला इलेक्शन होइतिला का भाई ना प्रेसिडेंट को तो पटाभी सीतारामया बुझिला ना नहीं उनको किए हरैतिले बुझिला ना नहीं बा तांगे डिफेटेड होइतिले कि ना पी सीतारामया कहा द्वारा कौन पार आंसर आर तर मन रखियो आंसर आसो कौन ना सुभाष चंद्र बोस हो करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस नेक्स्ट देख विथ रीड लिटराली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी जदि हम देखा रिट आसो कौन ना सुप्रीम कोर्ट पे रिट आसो आर्टिकल 32 अनुसार जदि हाई कोर्ट कथा देखा आम हाई कोर्ट पे रिट आसो कौन ना 2 to 6 आर्टिकल रे बुझला जदि रिट देखा 5 रिट्स आसो आपंकर जब देखा तो को रिट मीन्स कौन व्हाट इज योर अथॉरिटी व्हिच रिट लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी आंसर आसो कौन ना क्यू वारंटो बुझले मन रख मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट देखो हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया जदि हम देखा फाइनेंस कमिशन रो फर्स्ट चेयरमैन किए हिजिबे आंसर आसो कौन ना केसी नियोगी ओके नेक्स्ट देखो 17 नंबर देसी कौन द सिटी ऑफ डेस इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ यंगटेज रिवर जदि हम देखा यंगटेज रिवर कथा तो को सिटी आसो यंगटेज रिवर साइड रे कौन हो पार तो ये सिटी आसो कौन ना सांघाई नेक्स्ट देख
देखो 18 नंबर देइछि कोन ना द डिस्ट्रिक्ट इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ शिवमोगा that is famous for its iron ore and manganese mineral is located in which state of India? The district of Shivmoga ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ କମ ଫେମस ନା ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଆଣ୍ଡ ମାଙ୍ଗାନିଜ ମିନେରାଲ ପାଇଁ ଏଟା କୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଦେଖାଯାଏ ଲୋକେସନ କଣ ହେଇଯିବ ବା ଷ୍ଟେଟ କଣ ଆସିବ ଆ ପାଇଁ ତା ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବା ଏଟା ଆସିବ କଣ ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବୁଝିଲା ये के नेक्स्ट देखो द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जदि हम देखिबा लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर तो इंडिया रे कोठी यार लोकेशन अछि स्टेट आपण एठी मेंशन करिवे लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर लोकेशन कौन आसीबो आरो आंसर आसीबो कोन कि आसीबो तमिलनाडु थिला तमिलनाडु नेक्स्ट देखो इन रेन फॉरेस्ट्स व्हिच काइंड ऑफ कल्टीवेशन इज द प्रैक्टिस जदि हम देखिबा रेन फॉरेस्ट गुडा करे बा जोठे माने प्रचुर परिमाण रे वृष्टिपात हुए आउ सेटा कोन हुए ना जेहेतु फॉरेस्ट हैला जंगल गुडा को आउ गछ बड़ बड़ गछ गुडा को थाए तो सेही प्रकार फॉरेस्ट गुडा करे को कल्टीवेशन प्रैक्टिस करा जाए कोन हे परिबो तबले एठा आसीबो कोन ना स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन दैट इज कोन हे परिबो ताको हम कहि परिबा शिफ्टिंग कल्टीवेशन बुझिला स्लैश एंड बर्न लिखिले आपनर करेक्ट हबो कोनोसी असुविधा नाही स्लैश एंड बर्न लिखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट देखो इन इंडिया ट्रीज ऑफ व्हिच फॉरेस्ट टाइप that they lives for about 6 to 8 weeks in a dry summer पत्र छटा दिया जाए कौन ट्रीज ऑफ व्हिच फॉरेस्ट टाइप्स said they lives for about 6 to 8 weeks in a dry summer तो या पे को फॉरेस्ट आसीबो तो एटा आंसर आसीबो कोन ना ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट मन रखिबो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट बुझिले नेक्स्ट देखो 22 देछि एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय डेस माउंटेन्स जदि हम देखिबा एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय डेस माउंटेन्स हला एशिया और यूरोप को माउंटेन द्वारा सेपरेटेड हे जन बोली से पचारछि कोन आसीबो आंसर आसीबो कोन ना उराल माउंटेन्स हला उराल माउंटेन्स नेक्स्ट देखो बेले एटको 23 कहिछि कोन 23 देछि व्हिच कंट्री हैज द मोस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड जदि हम देखिबा को कंट्री रो हाईएस्ट टाइम जोन्स अछि बोली पचारछि से कोन आसीबो आंसर आंसर आसीबो कोन रो ना फ्रांस इज करेक्ट आंसर फ्रांस नेक्स्ट देखो द वियना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू जदि हम देखिबा वियना कन्वेंशन का सहित रिलेटेड ये गोटे एनवायरनमेंट आपनर क्वेश्चन गोटे हैला वियना कन्वेंशन कोन पे आसीबो तो कौन आसीबो ना प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर नेक्स्ट देखो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 प्रोवाइड्स वर्क फॉर हाउ मेनी डेज जदि हम देखिबा एनजीएनआरईजी एक्ट 2005 अनुसार मिनिमम केते दिन काम जोगाई दिया जाए मिनिमम केते दिन
तो ये आसीबो कोन एटलिस्ट लिखिबो 100 डेज लिखिबो हला 100 डेज। नेक्स्ट देखो द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज फॉर इंडियन सिटीजन्स इन द एज ग्रुप ऑफ। देखो आपनर आसुथिबा एटा गोटे मेसेज कोन ना पीएम जेजेबीवाई हैला बुझिला ना नहीं जीवन ज्योति बीमा योजना तो एटा को केते एज ग्रुप भीतर अछि इंडियन सिटीजन इन द एज ग्रुप ऑफ आसीबो 18 टू 50 इयर्स ओके। नेक्स्ट देखो व्हिच 5 ईयर प्लान प्राइमरली फोकस्ड ऑन द गरीब हटाओ इनिशिएटिव। जदि हम देखिबा को 5 ईयर प्लान रे गरीब हटाओ इनिशिएटिव कथा कुहा जायछि बा फोकस करा जायतिला गरीब हटाओ तो या पे को 5 ईयर प्लान आसीबो which 5 year plan primarily focused on the गरीब हटाओ इनिशिएटिव तो या पे आसीबो कोन ना फिफ्थ 5 ईयर प्लान बुझिला फिफ्थ 5 ईयर प्लान जोटा कि 1974 रो 1979 पर्यंत आसीबो फिफ्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट देखो 28 देछि इन व्हिच 5 ईयर प्लान वाज फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी स्लोगन यूज्ड। जदि हम देखिबा फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी स्लोगन तो एटा को 5 ईयर प्लान पे आसीबो कोन हे परिबो आंसर आरो तार मन रखिबो आंसर आसीबो कोन ना सेवेंथ हला सेवेंथ 5 ईयर प्लान पे आसीबो जोटा कि 1985 रो 1990 पर्यंत आसीबो कोन ना सेवेंथ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट देखो पिले which 5 year plan primarily focused on the growth with justice and equity बा हम जति देखिबा को 5 year plan रे ने मेन फोकस थिला बा तार स्लोगन थिला बा तार थीम थिला कोन ना ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी। प्राइमरली फोकस प्ले कोन लिखि दियो कोन which 5 year plan थीम और एरा कोन हे परिबो स्लोगन इज ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी आंसर आसीबो कोन ये ना नाइन्थ 5 ईयर प्लान नाइन्थ 5 ईयर प्लान जोटा कि 1997 रो 2002 पर्यंत आसीबो नाइन्थ 5 ईयर प्लान ओके। नेक्स्ट देखो फिर 30 नंबर देछि अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द टाइम लैग बिटवीन जॉब्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर ए न्यू जॉब और इज स्विचिंग बिटवीन जॉब्स। जदि हम देखिबा एठे को प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट आसीबो जेतबेला कोन होय जने इंडिविजुअल गोटे नुआ जॉब को सर्च करबा नुआ जॉब पे अप्लाई करे किंबा गोटे जॉब रे आ गोटे जॉब को कोन करे ना बदली करे तो सेही दीटा टाइम भीतर माने दीटा समय भीतर बा गोटे जॉब रे आ गोटे जॉब भीतर कोन किसे टाइम बळे के तो ई प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट को हमें की प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट कहबा एटा आंसर आसीबो कोन ना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मन रखिबो फ्रिक्शनल ओके फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखो ଦେଇଛି କ'ଣ in 1812 who described the hypothesis that equal volumes of different gases contains an equal number of molecules who described the hypothesis that equal volumes of different gases contains an equal number of molecules ଏଟା କାର theory ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଆସିବ ଆନ୍ସର आंसर आसो कौन ना एमिडो एभोगाडो एमिडो एभोगाडो बुझला मन रखिबो मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखो द ह्यूमन शोल्डर जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ ए डेस्क जॉइंट तो देखो आम डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट अछि बुझला नै तो ह्यूमन शोल्डर तो जॉइंट को प्रकार जॉइंट रो गोटे एग्जांपल हे जो देखो बोले ये सब सिंपल क्वेश्चन बुझला ना नै कौन हो परिबो तो या पे आंसर आसीबो कोन ना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मन रखिबो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट देखो 33 देजी which are called the amphibians of the plant kingdom which are called the amphibians of the plant kingdom amphibians means कोन उभयचर जल स्थल रहि परिबे तो प्लांट
किंगडम रे को प्लांट को आम कहवा कौन को कैटेगोरी को आम कहवा बुझला ना एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम एटा आसीबो कोन ना ब्रायोफाइटास मन रखिबो ब्रायोफाइटास नेक्स्ट देखो स्नेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम जदि हम देखिबा स्नेल्स तो एटा को कैटेगरी जीवो बा को फाइलम रे जीवो स्नेल्स गुडा कोन आसीबो स्नेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम आंसर आसीबो कोन दैट इज मोलुस्का ओके नेक्स्ट देखो व्हेन इज मार्टियर्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एवरी ईयर मार्टियर्स डे केबे आसीबो शहीद दिवस तो आसीबो केबे ना 30th जनवरी नेक्स्ट देखो इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे बा इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन डे केबे आसीबो डेट कोन ही परिबो आंसर आसीबो कोन ना 8th मार्च 8th मार्च नेक्स्ट देखो स्वामी विवेकानंद डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन जदि हम देखिबा स्वामी विवेकानंद डेथ एनिवर्सरी केबे आसीबो तो या पे डेट केबे आसीबो आंसर आसीबो कोन ना 4th जुलाई नेक्स्ट देखो व्हिच इज एन इंडियन मार्शल आर्ट फ्रॉम मणिपुर जदि हम देखिबा मणिपुर रो मार्शल आर्ट कोन हिजिबो कोन ही परिबो व्हाट इज द मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ मणिपुर तो आसीबो कोन ना हांगटा हम रखिबो हांगटा नेक्स्ट देखो 39 देछि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन दैट इज FIH लोकेटेड इंटरनेशनल ऑफ हॉकी फेडरेशन कोड आसीबार हेडक्वार्टर कोन आसीबो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एटा मन रखिबो आसीबो कोन ना लाउसेनी स्विट्जरलैंड लाउसेनी लाउसानी स्विट्जरलैंड बुझले नेक्स्ट देखो वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लोकेटेड वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लोकेटेड तो आसीबो कोन ना कुआलालंपुर मालयसिया मन रखिबो कुआलालंपुर मालयसिया नेक्स्ट देखो रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हिच कंजर्वेशन तो या पे आसीबो कोन ना मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आसीबो नेक्स्ट देखो 42 देछि हु रोड द ग्रेट इंडियन लिटरेरी वर्क्स मेघदूत एंड अभिज्ञान संकुतलम अभिज्ञानम संकुतलम who wrote the great Indian literary works that is Meghaduta and Abhigyana Shakuntalam आंसर आसीबो कोन ना कालिदास ओके नेक्स्ट देखो वेयर इज अंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क सिचुएटेड अंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कोड आसीबो लोकेशन कोन हिजिबो ये आसीबो कोडे ना कंबोडिया बुझला कंबोडिया हिजबार लोकेशन नेक्स्ट देखो देखो बेले हु वाज द
recipient of Rajiv Gandhi Khel Ratna Award was the first recipient ହେଲା ଲେଖି ଦିଅ first recipient first ଲେଖି ଦବ ହେଲା first आंसर ଆସିବ କଣ ନା ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦ नेक्स्ट देखो हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स क्या आसीबे आंसर आसीबो कोन ना ग्रिगोर मेंडल हला नेक्स्ट देखो द कांसेप्ट ऑफ त्रिरत्न इज रिलेटेड टू यदि हम देखिबा त्रिरत्न कहा सहित रिलेटेड हबो आसीबो कोन ना जैनिज्म सहित नेक्स्ट देखो द डीआरडीओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर तो डीआरडीओ रो एस्टैब्लिशमेंट ईयर केबे आसीबो आंसर आसीबो कहते 1958 FCCB stand for FCCB stands for कौन आसीबो आंसर आसीबो कोन ना फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल सॉरी कन्वर्टेबल UNVERTIBLE कन्वर्टेबल बॉन्ड्स नेक्स्ट देखो प्लांट सेल walls are composed of plant cell walls are composed of आंसर आसीबो कोन ना सेल्युलोज नेक्स्ट देखो लीच बिलोंग्स टू व्हिच फाइलम लीच बिलोंग्स टू व्हिच फाइलम आंसर आसीबो कोन ना एनिलिडा ओके व्हिच रूलर कंप्लीटेड द बृहस्पति टेंपल ऑफ तंजौर फर्स्ट क्वेश्चन अछि कोन व्हिच रूलर कंप्लीटेड द बृहस्पति टेंपल ऑफ तंजौर कोन है जिवे एटा आंसर आसीबो कोन ना राजा राजा चोल 1 बा राजा राजा 1 राजा राजा 1 बुझिला नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर कहिछि द प्रयाग प्रसादी बा आल्सो नोन एज द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ केस तो जदि हम देखिबा प्रयागी प्रशांति बा अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बुझिला ना नहीं तो एटा काहा बा को रूलर को कथा कोहे एटा बुझिला ना नहीं को एम्पायर पचारने आपन डायरेक्ट रूलर पचारछि ओके ओ रूलर सहित आसो प्रयागी प्रशांति इंस्क्रिप्शन बा अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जोटा कि तांकर अचीवमेंट उपरे विवरणी दिए आंसर आसो कौन ना समुद्र गुप्त बुझे मन रख जे कि कौन एम्पायर कौन हो ना गुप्त डायनेस्टी हो गुप्त गुप्त डायनेस्टी नेक्स्ट देखो हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी किए फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी आंसर आसो कौन ना दांती दुर्ग ओके नेक्स्ट देखो इन व्हिच ईयर द बैटल ऑफ हल्दी घाट वाज फाउट in which year the battle of haldigati was fought केबे आसीबो ना बैटल ऑफ हल्दीघाट आसीबो 1576 रे आसीबो ओके मन रखिबो इंपोर्टेंट डेट गुडा को द फेमस ट्रैवलर निकोलो डी कोंटी was from which country the famous traveler निकोलो डी कोंटी was from which country आगे को कंट्री रो बिलोंग करंदी कृष्णा देवराय समय आस्ते बोधे ना नहीं
आंसर आसो कौन ना इटली। ओके नेक्स्ट देखो 6 नंबर देछि इन 1851 who described the kingdom of Awadh as a cherry that will drop into our mouth one day, who described the king of Awadh as a cherry that will drop into our mouth one day। कौन आसीबो आंसर आसीबो कौन ना लॉर्ड डेलहाउसी। ओके नेक्स्ट देखो व्हिच वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑर्गेनाइज्ड द स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जदि हम देखिबा को भाइसरॉय को सहित आसी कोन ना स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया बस ताके कोन करथिले ना स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया तांको सहित जडित बा ताके स्टार्टिंग करथिले हले कोन आसीबो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया सहित आसीबो कोन दैट इज ए भाइसरॉय। देखो भाइसरॉय रे आपन क्वेश्चन आसे कारण भाइसरॉय गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक गुडा को गोटे माने मॉडर्न हिस्ट्री गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक हला तो मन रखिबो आंसर आसीबो कोन दैट इज लॉर्ड मायो मायो हला। नेक्स्ट देखो 8 नंबर देछि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड। जदि हम देखिबा तो आईएनसी फॉर्मेशन हैला आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ फॉर्मेशन हैला 1885 रे बुझिला ना तो सेही समय रे वाइसरॉय ऑफ इंडिया के थिले नेम द पर्सन हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द व्हेन द आईएनसी फॉर्मड। आंसर आसीबो कोन ना लॉर्ड डफरिन। ओके लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट देखो 9 नंबर देछि व्हिच बॉडी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द हेस्पी ब्लावेट्स्काई एंड हेसेस ओलकोट। जदि हम देखिबा को ऑर्गेनाइजेशन जोडा कि कोन दिटा प्रोमिनेंट दि जन प्रोमिनेंट कोन व्यक्तित्व आसीबे कोन हेस्पी ब्लावेट्स्काई एंड हेचएस ओलकोट जे कि कोन फॉर्मेशन करथिले बा को ऑर्गेनाइजेशन आंक द्वारा फाउंडेड हेतिला कोठे ना यूनाइटेड स्टेट्स रे एगुडा को आपण मु पढाइছি स्टार्टिंग रे पढाई दिस ऑलरेडी हला आंसर आसीबो कोन ना थियोसोफिकल सोसाइटी मन रखिबो थियोसोफिकल सोसाइटी। ओके नेक्स्ट देखो इंडिया's फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड ऑन 10th May 1857 बा जदि हम देखिबा सिपाही म्यूटनेंट स्टार्टिंग हला केबे ना 10th May 1857 तो एटा कोट स्टार्टिंग हेतिला बा को सिटी रो स्टार्टिंग हेतिला कोन इंडिया's फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस दैट इज सिपाही म्यूटनेंट। सिटी आपनरो कोन आसीबो रे दैट आंसर मन रखिबे मिरट। ओके मिरट नेक्स्ट देखो देखो 11 देसी लभानी इज द मोस्ट फेमस फोक डांस स्टाइल ऑफ व्हिच स्टेट। जदि हम देखिबा लभानी होची गोटे कोन गोटे पॉपुलर लोक नृत्य बुझिला ना नहीं तो एटा को स्टेट रो बिलोंग्स करबा बा को स्टेट रो लोक नृत्य होची लभानी। कोन हे परबो आंसर तो यार करेक्ट आंसर आसीबो कोन ना महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखो राउत नाच इज ए फेमस ट्राइबल डांस ऑफ व्हिच स्टेट। राउत नाच इज ए फेमस ट्राइबल डांस ऑफ व्हिच स्टेट कौन आसो आंसर आरो आंसर आसो कौन ना छत्तीसगढ़। ओके छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखो व्हिच सिटी इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। जदि हम देखिबा ओ सिटी के हम कहबा कोन नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट व्हिच सिटी इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट।
कौन आसीबो सिटिया सहित रिलेटेड ହେଲା ଇଷ୍ଟ ପଚାରୁଛି ହେଲା ଇଷ୍ଟ ମାନେ ସିଟି ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ ତ ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ନା ଶିଲଙ୍ଗ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରୋଟାଙ୍ଗ ପାସ୍ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାସେସ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତ ରୋଟାଙ୍ଗ ପାସେସ୍ କୋଉଠି ଆସିବ ବା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆର ଲୋକେସନ୍ ଆସିବ ତ ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ नेक्स्ट देख द इम्पोर्टाट पास दैट लिंक्स केरल विथ कोयम्बटूर तमिलनाडु पासेज कौन आसो ना को पासेज जोटा कि कौन करे केरल सहित कौन कोयम्बटूर को लिंक करे है जोटा कि तमिलनाडु रे सिचुएशन अच्छी केरल को तमिलनाडु को पासेज कनेक्ट करे जदि आप डायरेक्ट स्टेट कथा पचारे कौन आसवा रिलेटेड तो मन रखा सहित आसो कौन ना पालकाड गेफ पालकाड गेफ ओके नेक्स्ट देखो which two regions are biodiversity hotspots of India जदि हम देखिबा दीटा रीजन जोटा कि इंडिया रो मोस्ट प्रोमिनेंट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया दीटा प्लेस रो ना अपन कहबे दीटा रीजन रो ना आंसर आसीबो कोन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स हला आपण एटा कोन ईस्टर्न हिमालय भी मेंशन करि परिबे हला नेक्स्ट देखो द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग ओल्डर एलुवियम इज नोन एज देखो जदि हम देखिबा नॉर्दर्न प्लेन कोन करे ओल्डर एलुवियम असिएट है तो ओल्डर एलुवियम को आम कौन कहवा जोटा कि नॉर्दर्न प्लेन रे देखा जाए तार गोटे नेम अच्छी जोग्राफिकल नेम कौन आसीबो द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग ओल्डर एलुवियम इज नोन एज आंसर आसीबो कौन ना दैट इज भांगर ओके भांगर नेक्स्ट देखो देखो 18 नंबर देसी द लोहित इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर जदि हम देखिबा लोहित रिवर ये को रिवर रो ट्रिब्यूटरी हिजबो द लोहित इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर कौन आसीबो आंसर आसीबो कौन दैट इज ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र रिवर नेक्स्ट देखो 19 नंबर देछि व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया जदि हम देखिबा लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया कोडा हिजबो लॉन्गेस्ट रिवर इन द एशिया आंसर कौन आसीबो ये आसीबो कौन ना यंगटेज रिवर नेक्स्ट देखो ऑन व्हिच रिवर्स बैंक इज पानाजी लोकेटेड देखो गोवा रे आसीबो कौन लोकेशन पानाजी तो पानाजी को रिवर बैंक साइड रे आसीबो पानाजी देइरी को रिवर फ्लो होईची तो रिवर नेम कौन आसीबो ना मांडोवी रिवर मांडोवी रिवर नेक्स्ट देखो इन व्हिच कॉन्टिनेंट इज द कोलंबिया प्लेटू लोकेटेड जदि हम देखिबा को कॉन्टिनेंट आपन को कोलंबियन प्लेटू रो लोकेशन देखिबा को मिलिबो कौन आसीबो तो कोलंबिया प्लेटू आसीबो कोडे दैट इज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पचाछि जेहेतु आपन एडे मेंशन करबे कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका नेक्स्ट देखो कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट आपन पचाछि कालाहारी डेजर्ट
तो ये आसीबो कोन ना अफ्रीका। नेक्स्ट देखो द आइलैंड ऑफ माडागास्कर इज लोकेटेड इन व्हिच ओशन। जदि हम देखिबा आइलैंड माडागास्कर को ओशन रे आसीबार लोकेशन कोन आसीबो? आंसर आसीबो कोन ना इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। नेक्स्ट देखो which sea drawn line act as the divider between the continents of Africa and Asia। যদি ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ସି ଯୋଉଟା କି ସେପାରେଟେଡ୍ କରେ ଦିଟା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କୁ ଆଫ୍ରିକା ଏଣ୍ଡ ଏସିଆକୁ ତ ୟା ବିଟୱିନ୍ ରେ କୋଉ ସି ଆସିବ ବା ଇଏ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଆଫ୍ରିକା ଏଣ୍ଡ ଏସିଆ କଣ ଆସିବ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ ନା ରେଡ୍ ସି। ରେଡ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେମ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓହୋ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ that divides Morocco and Spain। तो मोराको एंड स्पेन मध्य को स्ट्रेट देखा जिवो बा या को सेपरेटेड करे को स्ट्रेट। नेम द स्ट्रेट दैट डिवाइड्स मोरक्को एंड स्पेन। मोरक्को एंड स्पेन भीतर आसीबो कोन ना स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। मन रखिबो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर हला जी आई बी आर ए एल टी ए आर हला। नेक्स्ट देखो मसाई ट्राइब्स आर फ्रॉम व्हिच ऑफ कंट्री। जदि हम देखिबा मसाई ट्राइब्स को कंट्री रे देखा जाए मसाई ट्राइब तो मसाई ट्राइब रो लोकेशन आसीबो कोडे ना केन्या। नेक्स्ट देखो द कैपिटल ऑफ क्यूबा। कैपिटल ऑफ क्यूबा ये आसीबो कोन हेवना। ओके एस ए भी ए एन ए हला हेवना। नेक्स्ट देखो देखो 28 देसी द प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स बाय द सेंटर इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। जदि हम देखिबा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर तो एटा को कॉन्स्टिट्यूशन रो बरोड हेछि द प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स तो बरोड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। जदि हम देखिबा आंसर आसीबो कोन ना कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखो 29 देछि द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। जदि हम देखिबा स्ट्रक्चरल पार्ट हला ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम बा मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोठो बा कोठो बरो होइछि बुझिला ना नहीं मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोन हे परिबो। आंसर आसो कोन ना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मन रखिबो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बुझिला। नेक्स्ट देखो 30 नंबर देसी हु कैन रिमूव द चेयरपर्सन्स एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन। जदि हम देखिबा चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन को किए रिमूव करि परिबो हला बा तांको पदरु हटाई देई परिबो द पर्सन के आसीबे कोन हे परिबो who can remove the chairperson and the members of the state human rights commission। आंसर है कौन ना द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो 31 देसी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज फॉर व्हिच ए मनी बिल और ए फाइनेंस बिल कैन बी स्टेड बाय द राज्यसभा। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज फॉर व्हिच ए मनी बिल किबा गोटे फाइनेंस बिल कोन हबो राज्यसभा रे रही पारे मैक्सिमम नंबर ऑफ डे केते हिस
ओके मनी बिल और फाइनेंस बिल तो केते केते माने टोटल डे केते आसीबो आपे ना मन रखिबो दैट इज 14 डेज आसीबो 14 डेज आसीबो नेक्स्ट देखो 32 देछि ऑन व्हिच रिकमेंडेशन वाज द सेंट्रल विजिलेंस कमिशन बा सीवीसी एस्टैब्लिश्ड जदि हम देखिबा सेंट्रल विजिलेंस कमिशन सहित को कमिटी रिलेटेड हबो बा को कमिटी आसीबो सेंट्रल विजिलेंस कमिशन सहित काहा रिकमेंडेशन रे आसिला कोन ना सेंट्रल विजिलेंस कमिशन दैट इज सीवीसी आंसर आसीबो कोन ना सांथनम कमिटी मन रखिबो सांथनम कमिटी ओके नेक्स्ट देखो देखो 33 देछि व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर जदि हम देखिबा को आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल जोटा कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर को सहित रिलेटेड बा को आर्टिकल रे मेंशन अछि कोन अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर कोन आसी आर्टिकल पे आर्टिकल आसीबो केते 155 नेक्स्ट देखो 34 देछि व्हिच आर्टिकल ऑफ द constitution contains provisions for the panchayats and local body government डायरेक्ट आपण आर्टिकल मेंशन करिवे असुविधा नहीं है which article of the constitution contains provisions for the panchayat and local body government कौन है परिवार आंसर देखो या भाई आर्टिकल कौन आसीबो एटा मेंशन करिवो आर्टिकल आसीबो 243 टू 243 ओ आसीबो कोन ना पंचायत एंड लोकल गवर्नमेंट्स पे 243 टू 243 ओ जदि हम देखिबा पार्ट आपे केते आसीबो ना पार्ट 9 आसीबो ओके नेक्स्ट देखो 35 which article of the Indian constitution is related with the right of president to address and send message to houses जदि हम देखिबा कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल मेंशन अछि कोन प्रेसिडेंट को अधिकार अछि राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस माने बोथ हाउस बा पार्लियामेंट को से कोन एड्रेस ऑफ सेंड मैसेज करि परिबे बुझिलो ना या पे आर्टिकल कोन आसीबो तो मन रखिबा आर्टिकल कोन आसीबो आर्टिकल 86 आर्टिकल 86 नेक्स्ट देखो 36 which article of the Indian constitution deals with the subsidiary power of the supreme court जदि हम देखिबा subsidiary power of the supreme court को आर्टिकल रे मेंशन अछि subsidiary power of the supreme court तो या पे आर्टिकल कोन आसीबो केता आसीबो आर्टिकल 140 नेक्स्ट देखो which article of discusses the veto powers of the president of India जदि हम देखिबा को आर्टिकल रे प्रेसिडेंट को veto power विषय डिस्कस होई छला या पे आर्टिकल कोन आसीबो आंसर आसीबो कोन ना आर्टिकल 111 नेक्स्ट देखो 38 which is the last element in Newland law of octaves classification जदि हम देखिबा Newland law of octaves classification रे शेष एलिमेंट कोन हिजो नेम द लास्ट एलिमेंट एटा से कोन ना थोरियम आसीबार करेक्ट आंसर थोरियम नेक्स्ट देखो 39 देछि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर लेजर फुल फॉर्म कोन हिजो लेजर फुल फॉर्म कोन होबो द एब्रिविएशन ऑफ लेजर आंसर आसीबो कोन एल रे लाइट ए रे एम्प्लीफिकेशन
एस रे कोन आसीबो इम्प्लिकेशन बाय एस रे आसीबो कोन सिमुलेटेड तापर आसीबो ई रे कोन आसीबो एमिशन ऑफ आर रे आसीबो रेडिएशन नेक्स्ट देखो 40 ଦେଇଛି what type of the nuclear reaction is responsible for liberation of energy in the nuclear reactor ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା न्यूक्लियर रिएक्शन कौन हबो न्यूक्लियर फिजन ना फ्यूजन को प्रिंसिपल ऊपर काम करे न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी इन द न्यूक्लियर रिएक्टर कौन आसीबार तो ये आसीबो कोन ना न्यूक्लियर फिजन FISSION ହେଲା ON फिजन नेक्स्ट देखो 41 ଦେଇଛି कोन हाउ इज द voltmeter connected in all circuits to measure the voltage between two points ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା voltmeter circuits गुडारे केमिति कनेक्टेड हुए ହେଲା सीरीज और पैरेलल कौन आसीबो डे आंसर आसीबो पैरेलल नेक्स्ट देखो the phenomenon of scattering of light by colloidal particle gives rise to dash effect the phenomenon of scattering of light by colloidal particles gives rise to dash effect तो या colloidal particle गुडको की इफेक्ट दियंती एटा पढिछन आपण ए आसीबो कोन ना टिंडल इफेक्ट नेक्स्ट देखो नेक्स्ट द 43 ଦେଇଛି which is the largest group of animals ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଆନିମଲ୍ସ କଣ ହେଇଯିବ ହେଲା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫାଇଲମ୍ କଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ which is the largest group of animals एनिमल किंगडम रो लार्जेस्ट ग्रुप कोडा हिजबो बा लार्जेस्ट फाइलम कोन हिजबो बोली पचासी आंसर आसो कोन एर्थोपोडा हला एर्थोपोडा नेक्स्ट देखो 44 ଦେଇଛି कोन what is the name of the disorder caused by the presence of an extra chromosome 21 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 रहे तो को प्रकार डिसऑर्डर देखा जाए बोली पचारछि what is the name of the disorder caused by the presence of an extra chromosome 21 तो या पे आसीबो कोन ना डाउन सिंड्रोम आसीबो डाउन सिंड्रोम नेक्स्ट देखो cataract is a disease that affects the cataract is a disease that affects the eye okay next देखो on which day is world day to combat desertification and drought observed on which day is world day to combat desertification and drought observed केबे आसीबो डेट आपन पचासीडे सेट मन रखबे आंसर आसीबो कोन ना 17th जून नेक्स्ट देखो 47 देइछि टू रेज अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन व्हेन इज ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेटेड जदि हम देखिबा टाइगर डे बा ग्लोबल टाइगर डे केबे आसीबो टू रेज अवेयरनेस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन व्हेन इज ग्लोबल टाइगर डे ऑब्जर्व तो ग्लोबल टाइगर डे केबे आसीबो ना 29th जुलाई 29th जुलाई नेक्स्ट देखो 48 नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन नेशनल हैंडलूम डे मोस्ट इंपोर्टेंट आपण जानि नेशनल हैंडलूम डे केबे आसीबो
तो ये आसो केबे ना 7th अगस्त 7th अगस्त। नेक्स्ट देखो देखो 49 ଦେଇଛି when is national sports day celebrated in India? ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡେ କେବେ ଆସିବ? କେବେ ଆସିବ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡେ? ଆନ୍ସର ଆସିବ 29th ଅଗଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ when is the national energy conservation day observed? when is the national energy conservation day observed? ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଏନର୍ଜି କନଜରଭେସନ ଡେ କେବେ ଆସିବ ନା 14th ଡିସେମ୍ବର।